Welcome champs to English ka Potli and I am Abhijit Rakshit. Today's class will be Act 1 and Scene 1 of Julius Caesar. So you are very much acquainted with this fact that ICSE has recently introduced this change in the literature syllabus and Julius Caesar is introduced. कोई डरने का बात नहीं है, आज फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा एक्ट 1 सीन 1 को लेकर. कम ऑन लेट अस स्टार्ट. चलो आज शुरू करते हैं. एक्ट 1 सीन 1 में यू सी एंटर फ्लेवियस मरूलस एंड सर्टेन कॉमनर्स एंड see Flavius and Marulus, these are two characters, they are the two tribunes and they were just roaming in the street of Rome. On this day all the common people, they are celebrating the arrival of Caesar. Today Caesar has defeated Pompey's son, okay, and now after the defeat he is coming back to Rome. So this is the setting of the drama. And here two characters are there, Flavius and Marulus, they are the two tribunes. Come on, let us start. This is the first speech of Flavius. Hence home, you idle creatures, get you home. This means that he is telling, go off. Come on, he is addressing to the common citizens. He is telling to the citizens to go away to their home. कि भाई तुम लोगों सब घर चले जाओ. You just all go away to your home. Okay. Is this a holiday? आज क्या holiday है? What? Know you not? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak. What trade art thou? What trade art thou? What is the meaning of this one? तो यहाँ पर here Flavius is asking, is this a holiday? See previously, जैसे कि आज हम लोग कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन लेते हैं, तो previously you know people used to wear the dress of their profession. जो ड्रेस प्रोफेशन का रहते थे उसी प्रोफेशन का ड्रेस पहनते थे. यहाँ पर दो व्यक्ति थे, वन कारपेंटर वॉज देयर एंड अ कॉबलर वॉज देयर. कारपेंटर अपना ड्रेस का बिना चल घूम रहा था and the cobbler was also roaming about in the street without their dress which they should wear. That is why Flavius means he is asking, is this a holiday? आज क्या कोई holiday है कि आप लोगों ऐसा normal dress पहन के घूम रहे हैं? Is this a holiday that you are all moving about in the streets, just celebrating? What? Know you not? तो आप क्या ये नहीं जानते? Don't you know this one? Being mechanical, that means this is not a weekend, this is a weekdays are there. Being mechanical मतलब आज काम का दिन है, today it is the working day it is. You ought not work upon a laboring day. तो काम का दिन में, well it is a working day, as it is a working day, you just not walk about by wearing a फॉर नॉर्मल ड्रेस. जस्ट माने कोई फेस्टिव ओकेशन में जो ड्रेस पहनते हैं, तो उन लोगों ने वो फेस्टिव ओकेशन का ड्रेस पहन के घूम रहा है. क्या फेस्टिव ओकेशन का ड्रेस पहन का हमें भी अच्छा लगता है घूमने में. तो स्कूल में कभी कभी जब कलर ड्रेस दे देते हैं तो वी ऑल्सो एंजॉय दैट वन. भाई आज कलर ड्रेस पहन के स्कूल जाएंगे, बहुत मजा आएगा. क्या आप लोगों को मजा नहीं आता है? हमें तो बहुत मजा आता था यार. स्कूल में जब किसी दिन बोलता था कि आज कलर ड्रेस पर के पहन के जाना पड़ेगा, तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट. यार टुमारो विल जस्ट गोइंग टू बूम. ओके चलिए फालतू बात हो जा रहा है. कम ऑन लेट अस प्रोसीड. बीइंग मैकेनिकल, यू ऑट नॉट वर्क अपॉन अ लेबरिंग डे without the sign of your profession. That means they were not wearing their professional dress. Speak. What trade art thou? बताइए भाई आप किस प्रोफेशन से है? यू बिलोंग टू विच प्रोफेशन? व्हाट इज योर प्रोफेशन? नाउ द कारपेंटर टेल्स, व्हाई सर अ कारपेंटर? सर आई एम ए कारपेंटर, मैं एक कारपेंटर हूं. तो नाउ मरूलस स्पीच इज देयर. वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल? आपका लेदर एप्रॉन कहाँ है? कारपेंटर्स दे यूज्ड टू वेयर अ लेदर एप्रॉन. तो आपका लेदर एप्रॉन क्या कहाँ है? वेयर इज योर लेदर एप्रॉन? And thy rule, you know rule means the ruler. They used to carry the ruler. So carpenters, तो उन लोगों क्या करते थे कि उन लोगों माने you already have seen
that carpenters, the ruler is a measuring instrument. तो उन लोगों को कोई भी measuring के लिए they used to carry the ruler. This is a ruler. What dost thou with thy best apparel on? Means what are you doing over here by wearing your best dress? Means your festive dress. You, sir, what trade art thou? Come on, sir. What profession do you follow? आपका profession क्या है, sir? The cobbler tells, truly, sir, in respect of a fine workman, I am but as you would say a cobbler. तो मेरा जो काम है सर, तो I am a cobbler. Means well sir, as far as I may be considered, I am a very fine workman and I am a cobbler. Cobbler means you know, means a person who repairs shoes. जो जूता जो है, हमारा जो shoes है, shoes को repair करते हैं cobbler. Then Marulus, but what trade art thou? Answer me directly. लेकिन Marulus यहाँ पर confuse हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं, just becomes very irritated and he tells, okay, but what trade art thou? आपका trade क्या है? Answer me directly. Cobbler then tells, a trade, sir, that I hope may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls. Then he tells, a trade which a man may use with a clear conscience. So I am clearly telling, sir, that I am a mender of bad souls. You know, here there is a confusion arises. So this soul word, this is a pun. Pun are double meaning words. Means their pronunciation is same but their spelling are different. तो यहाँ पर souls जो है, Marulus thinks that this is soul, S-O-U-L, soul. But here the cobbler means to tell that soul, S-O-L-E, that means the shoes of का soul. जूते का जो सोल होता है, the cobbler means to tell that one. लेकिन Marulus इसको गलत समझते हैं. Marulus means misinterprets this one and he thinks that cobbler is telling S-O-U-L-S. Okay, then Flavius tells again, what trade thou knave? What trade thou knave? Knave means you know naughty fellow, bad fellow. भाई आपका काम क्या है, you naughty fellow? Thou naughty knave, what trade? What is your trade? आपका trade क्या है, you naughty fellow? Then the cobbler tells, nay, I beseech you, sir, be not out with me. Yet if you be out, sir, I can mend you. So here the cobbler tells, ki now I beg you, sir. Beseech means I beg you, I request you, sir. Do not be out with me. You do not lose your temper. आप गुस्सा मत हो जाइए सर, प्लीज डोंट बी आउट विथ मी, डोंट बी एंग्री विथ मी, डोंट लूज योर टेम्पर. ओके, तो विथ मी. येट इफ यू आर आउट ऑफ टेम्पर आई कैन मेंड यू. एंड देन ही इज टेलिंग, येट इफ यू आउट, सर अगर आप गुस्सा हो जाते भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू आर ऑल्सो गेटिंग एंग्री मीन्स इफ यू आर लूजिंग योर टेम्पर, then also no problem, I can mend you. That means I can repair you. मैं आपको repair कर सकता हूँ. Then Marulus gets infuriated. What means thou by that? What do you mean by this? Mend me, thou saucy fellow, you insolent fellow, you bad fellow. Saucy means insolent. तो what are you telling that you are going to mend me? क्या बात कर रहे हो, कह रहे हो आप? What are you telling? आप मुझे repair करेंगे? Now cobblers, again this is the cobbler speech. Why sir, cobble you? I am going to stitch you up, sir. Cobble means to stitch up. तो sir मैं आपको stitch कर दूंगा, means I will repair your shoes. Okay, now this is the speech of Flavius again. Thou art a cobbler, art thou? That means you are a cobbler, आप repairer of shoes हो. Then what happened? At last they are able to understand whatever the confusion is there. That confusion is cleared. Then they were able to understand क्या बोल रहा है व्यक्ति. What this man is telling. They were able to understand now. Cobbler. This is the cobbler speech. Truly, sir,
all that I live by is with the all. I meddle with no tradesman's matters, not women's matters, but with all I am indeed, sir, a surgeon of old shoes. When they are in great danger, I recover them, as proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. See, by this speech, the cobbler means to tell, in truly, sir, means indeed, sir, all that I live is with the all. You know, all means what? AWL. So this is all. This is a. Have you ever seen a shoemaker? Means जो cobbler होते हैं उसका सामने कभी गए हो आप लोग? What champs? Have you ever visited a shoemaker? Champs, तो द shoemaker का सामने में वन आयरन टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका ऊपर वो शूज को रखते हैं, उसमें they used to keep the shoe, उसमें रख के they used to mend the shoe. तो this is an instrument which the cobblers have. तो ये this is an all. So he is telling that I live by is with the all, means I always remain engaged with my all. I meddle with no tradesman's matters, means I don't interfere, means I don't interfere with the matters of other tradesmen. किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे tradesman जो है, I never interfere with them. हम लोगों को भी कभी किसी का साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए. चलो, see, he is telling that I never interfere with any other tradesman or those of women, but still I remain with my all. I am indeed, sir, though, but with my all, indeed, sir, a surgeon of old shoes. Really, sir, I am a surgeon. तो यहाँ पर थोड़ा सा one sort of funny thing is there. He is telling that I am the surgeon, means मैं old shoes का doctor हूँ sir. मैं old shoes का doctor हूँ. I am the doctor of old shoes. He is telling that when they are in great danger, I recover them. Whenever the shoes are in great danger, I just repair them. मैं वो shoes को repair करता हूँ. As proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. He is telling there is no person in this room whose shoes I have not made. Sabhi ka shoes, neat's leather, means you know what is the meaning of neat's leather? Means the leather which is made from a cow, that is known as a neat's leather. Means no person is there in Rome who has not passed my handiwork. मैं सभी का शूज को बनाया हूं. I have repaired and made everybody's shoes in Rome. He means to tell this one. Okay, come on, let us proceed. Flavius, but wherefore art not in thy shop today? Why dost thou lead these men about the streets? Now Flavius tells कि भाई, why are you then not in your shop today? आप आपका शॉप में क्यों नहीं है? आज आपका दुकान में क्यों नहीं है? Why dost thou lead these men about the street? क्यों आप, why are you leading all these men about in the street? आप ये व्यक्ति लोगों को लेके streets में क्यों घूम रहे हैं? Why are you just moving about here? Now, Cobbler tells, truly sir, to wear out their shoes. सर, मैं इन लोगों का शूज को वेयर आउट करने के लिए घूम रहा हूं. I am just moving about in the street so that their shoes will get spoiled. Okay, बड़ा चालाक है लेकिन. Truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work. मुझे और भी काम मिले. पक्का बिजनेसमैन है भाई, एकदम पक्का बिजनेसमैन. Truly sir, to wear out their shoes to get myself into more work. But indeed sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. Sir, actually जो बात है, we are just celebrating this as a holiday because Caesar is returning and we are enjoying the triumph of Caesar. हम लोगों Caesar का triumph को enjoy कर रहे. We are just celebrating that Caesar has become victorious. Now Marulus gets infuriated. Wherefore rejoice? Wherefore rejoice? भाई क्यों मजा करे? Why you will enjoy? What
conquest brings he home. Conquest means what? After winning a war, what gains he has brought. भाई क्या प्रॉफिट ला रहा है वो? What tributaries follow him to Rome to grace his captive bonds in chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things. तो now what happened? ये तो बहुत गुस्सा हो जाता है. Marulus becomes infuriated and he is telling कि भाई जूलियस सीजर क्या प्रॉफिट अर्न किया है. To grace in captive bounds his chariot wheels. You know, previously when any king used to win, तो किंग क्या करते थे, जो हम अपना जो रथ होता था, चैरियट होता था, उस चैरियट में he used to, in the wheel of the chariot, he used to bind all the important officials, even the king also, उस चैरियट का व्हील में बांध के लेके आता था. और उसका रिलीज के लिए जो कंट्री हैज डिफीटेड माने डिफीटेड कंट्री से जस्ट फॉर द रिलीज ऑफ दैट किंग एंड जस्ट फॉर द रिलीज ऑफ दोज ऑफिशियल्स दे यूज्ड टू चार्ज ए ह्यूज लमसम. तो दैट इज व्हाई मरूलस इज टेलिंग भाई किस कैप्टिव्स को उन्होंने लाया, व्हाट कैप्टिव्स ही हैज ब्रॉट. उसने तो कोई भी कैप्टिव्स नहीं लाया. That he is earning a lot of ransoms. कोई भी ransoms नहीं होगा. You blocks किसे कहा जाता है? Blocks means the persons who are heartless, जिसका कोई emotion नहीं होता, non-living things. You stones, you worse than senseless things. Oh you hard hearts, माने तो आप लोगों में कोई भी hearts नहीं है. You are all emotionless. You cruel men of Rome. न्यू नॉट पॉम्पे. क्या आप लोगों को पॉम्पे का बात याद नहीं है? डोंट यू रिमेंबर पॉम्पे? मेनी अ टाइम एंड ऑफ्ट हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर्स एंड विंडोज, ये टू चिमनी टॉप्स. जब पॉम्पे जिंदा था, व्हेन पॉम्पे वाज अलाइव, you all people used to climb up to walls and battlements, to towers and windows, even to chimney tops. चिमनी को भी आप लोगों, you never used to even spare the chimneys also. See this thing. यहां पर एक बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं. I'm just going to tell you one thing. This citizens ना, they are very fickle minded. कभी भी कोई भी लीडर आता है तो हम लोग उसी लीडर को फॉलो करते हैं. पुराना लीडर का बारे में हम लोग भूल जाते हैं. तो दिस इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स ऑलवेज फॉरगेट. दे आर वेरी फ्लेक्सिबल और माने फिकल माइंडेड. दे आर वेरी फिकल माइंडेड. तो दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग कि भाई हैव यू फॉरगॉटन पॉम्पे? क्या आप पॉम्पे को भूल गए हैं? तो व्हेन पॉम्पे वाज अलाइव, यू यूज्ड टू क्लाइंब अप द वॉल्स एंड बैटलमेंट्स, टू टावर्स एंड विंडोज, इवन टू चिमनी टॉप्स. योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स एंड देयर हैव सैट the lifelong day with a patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. सारा दिन वहां बैठे रहते थे with your infants in your arms, and there have sat the lifelong day with patient expectation to see Pompey pass the streets of Rome, just to see Pompey passing the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks? And when the very moment you used to see Pompey, the arrival of Pompey, all of you used to shout in universal shout, माने एक साथ जोर से आप लोगों चीखते थे. And Tiber, it is a name of a river. Even the tribal trembled under her banks, means the river used to tremble because of the universal shout of the people. Follow champs? To hear the replication of your sounds made in her concave shores. This means that the Tiber trembled her banks to hear the repeated echoes of the sound in her hollow shores. The Tiber used to tremble. Okay, means it used to tremble because of the sound, because of the echo which appeared. And do you now put on your best attire? And today you all are wearing your best dress, your formal dress. And do you now call out a holiday? And आज आप इसको holiday declare कर रही हो, just celebrating. हाँ, जिस पॉम्पे के लिए आप लोगों ने इतना कुछ किया, just to have a glimpse of Pompey, used to stand for the whole day
और उसी पोम्पे को आज आप भूल गए. कम ऑन, टुडे you have forgotten that Pompey and this Caesar who has defeated Pompey and even killed his son and is returning after killing Pompey's son, and you are celebrating the victory of Caesar. And do you not call out a holiday, and do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood, who has defeated Pompey and who has shed Pompey's blood? Be gone. आप लोगों यहां से चले जाइए. कम ऑन, गो फ्रॉम हियर. रन टू योर हाउसेस, फॉल अपॉन योर नीज, प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग. आप लोग सब, एवरी वन ऑफ यू, गो बैक टू योर हाउसेस, फॉल ऑन योर नीज, प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग. कम ऑन, यू गो and run to your houses and fall upon your knees, pray to the God to halt the plague. Okay, to halt the plague that indeed must light on this ingratitude. Means the plague is going to happen, some harmful thing is going to happen, some harm is going to happen on you. Just go and pray God that harm may not happen to you. आप लोग उन सब घर चले जाइए और भगवान का सामने जाके प्रे करिए. That is sure to fall upon men for such ingratitude. And as you have done this ingratitude, means unthankful thing which you have done, इसके लिए आप जाके भगवान का सामने में जाके माफी मांगिए. Go and fall in front of God and ask forgiveness. Flavius, go good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort. तो now what happened? Flavius tells, so countrymen, आप लोगों सब यहां से चले जाइए और जितना भी आप लोगों का कैटेगरी का व्यक्ति लोगों है उन लोगों को एक्यूमुलेट करिए, गैदर करिए. असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर कैटेगरी ऑफ योर सॉर्ट, ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक. सभी जाके टाइबर रिवर का सामने असेंबल हो जाइए. कम ऑन, एवरी वन ऑफ यू गो एंड असेंबल इन फ्रंट ऑफ द टाइबर रिवर and weep your tears, and go and stand in front of the river Tiber and weep there into the channels till the lowest stream to kiss the most exalted shores of all. And you go and cry and allow your tears to fall in the river Tiber till the lowest stream rises to the top of the bank, till the river rises up to the top of the bank. Means टीयर ड्रॉप से रिवर का जो लोएस्ट जो पानी का लेवल है, इट विल राइज अप टू द टॉप, टू द ब्रिम, इनटू द चैनल्स टू द लोएस्ट स्ट्रीम, डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल. नाउ ऑल द कॉमनर्स, मींस ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजंस, दे गो. सब चले जाते हैं. एंड फ्लेवियस टेल, सी where's this basis metal be not moved. Now he tells, see how these base natures are moved. देखो मैंने सबको देखो मैंने कितना अच्छा तरह से इन लोगों को समझाया. I have made them understand in such a good way. Okay, see, all of them have gone. They vanished tongue-tied in their guiltiness, means they do go off silent in their sense of guilt. They have realized that they have committed a guilt. Okay, now go you down that way towards the capital. This way will I. आप उस कैपिटल को तरफ आप चले जाइए. दिस वे विल आई, और मैं यहां से जाता हूं. डिसरोब द इमेजेस इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमोनीज. माने यहां पर जितना भी इमेजेस है, एंड वट एवर द इमेजेस, स्टैचूज, वट एवर इट इज देयर, इफ दे आर हैविंग एनी डेकोरेशंस, जस्ट रिमूव ऑल दोज डेकोरेशंस. ये जो सेरेमोनियस डेकोरेशंस जो किया है, जस्ट रिमूव ऑल दोज डेकोरेशंस. सभी डेकोरेशंस को रिमूव कर दीजिए. ओके, नाउ if you do find them decked with ceremonies. Now Marulus' speech is there. May we do so. You know it is the feast of Lupercal. उसने पूछा, Marulus is asking, is it proper? क्या आज ये सही रहेगा? क्योंकि आज Lupercal festival है. तो Lupercal, it is a festival which is celebrated on the 15th of February. तो 15 फरवरी को Lupercal festival सेलिब्रेट किया जाता है. ल्यूपरकल फेस्टिवल एक पैस्ट्रल फेस्टिवल होता है. तो नाउ दैट इन दिस फेस्टिवल सीजर इज ऑल्सो गोइंग टू कम. नाउ फ्लेवियस स्पीच इज देयर. इट इज नो मैटर. अरे भाई कोई बात नहीं,
come on, no matter it is, okay, it does not matter. Let no images be hung with Caesar trophies. I will about and drive away the vulgar from the street. मैं यहाँ पर घूमता रहूंगा. I will just roam about here. I will go around and try to drive away the common people from celebrating, okay, the triumph of Julius Caesar, and drive away the vulgar from the streets. So do you too. आप भी वही काम करिए. Where you perceive them thick, wherever you will find them gathering. Perceive means find them thick. Thick means there wherever you will find a gathering. These growing feathers plucked from Caesar's wing. See, यहाँ पर पता चलता है कि पब्लिक सपोर्ट है सीजर का पास. See, everybody has forgotten the sacrifices of Pompey. Pompey का बारे में सब भूल गया है. तो यहाँ पर सीजर का एक सबसे बड़ा माने अच्छा चीज है. It's just a good quality of Caesar. He has got the support of the public. Public का support उनका साथ है. तो that is why Flavius is telling ये growing feathers. Growing feathers means what? Caesar is gaining public support. उसमें public का support आ रहा है, and this is some sort of advantages. The feathers, these are the growing feathers. These are the advantages. See, this is the metaphor. Growing feathers means advantages which Caesar has. Plucked from Caesar's wings. Wings means Caesar is growing wings. That means with these wings he will fly high up. Means he is going to gain more popularity, and by gaining more popularity he will be able to rule the whole Rome. So now what happened? These tribunes, Flavius, they are very afraid that Caesar may try to be a monarch. हो सकता है कि सीजर ये अभी जो है, तो फिलहाल अब तक यहाँ पर रिपब्लिक था. रोम में रिपब्लिक वाज देयर. नाउ दे वर वेरी मच अफ्रेड अगर सीजर में टर्न टू बी अ मोनार्क. क्योंकि आप लोगों को मैंने इसका पहले वाला वीडियो में पूरा जो जूलियस सीजर का एक्सप्लेनेशन था तो मैंने वहां पर बताया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वाज अ ट्रायम्विरेट वाज देयर. मींस 3 जन का सरकार था. वन वाज पॉम्पे, वन वाज जूलियस सीजर, अनदर वाज क्रेशियस. तो जूलियस सीजर ने ऑलरेडी पॉम्पे को डिफीट कर दिया. पॉम्पे हैज ऑलरेडी डाइड. पॉम्पे का भी सन जो था, पॉम्पे का जो बेटा लोगों, उन लोगों को भी जूलियस सीजर हैज ऑलरेडी किल्ड इन द वॉर. नाउ देयर आर वेरी चांसेस आर देयर दैट जूलियस सीजर में टर्न टू बी अ मोनार्क. हो सकता है. दैट इज व्हाई फ्लेवियस इज अफ्रेड. ही इज टेलिंग दैट दिस ग्रोइंग फेदर्स प्लक्ड फ्रॉम सीजर्स विंग will make him fly an ordinary pitch. That means he will not be able to fly very high. Means उसका popularity ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. His popularity may not be very much. Will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of men? If today only these feathers are not cut, he will fly. Soar means what? Fly above the view of men. मैं इतना ऊपर उड़ना शुरू करेगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति मीन्स अ नॉर्मल मैन विल नॉट बी एबल टू सी सीजर. ही विल रीच सच अ हाइट and keep us all in servile fearfulness, and we all will be under the fear of servility. हम लोगों को उनका डर में जीना पड़ेगा. We have to stay under the fear of Caesar because he will turn to be a monarch, and you already know what is monarchy. वो अपना मनमर्जी करेगा. He will have his own rule. Now they all goes away. तो दोनों जो था मरूलस एंड फ्लेवियस, they exit from the stage. तो चैम्प्स, आज का क्लास कैसा लगा? How you enjoyed this class? I think you have little bit understood the lesson. See, you watch this video and keep the book by your side and read it and see the explanations. I think you will be able to understand. आप लोगों को जरूर समझ में आएगा. If any doubts are there, you are free to give comments to me. मुझे बताइए कि क्या improvement करना चाहिए आप लोगों को और क्या चाहिए, what you need more. आज तक इतना ही रहेगा. Then in my next video, I am going to explain the Act 1 and Scene 2. Just wait for my video. तब तक लेकिन मस्ती चलता रहेगा. ओके, मस्ती चलता रहेगा. पढ़ाई का साथ साथ मस्ती भी होगा, खेल भी होगा, सब कुछ होगा. ओके, बाय चैम्प्स एंड बेस्ट ऑफ लक.